Hello everyone, welcome to my channel. In this lecture we will discuss BCC301, BCC401 and other code present on your screen. Subject name IS Cyber Security Unit 1 Topics Introduction to Cybercrime. Origins of the word cybercrime. Information security and CIA Triad. So now let's get started. Today's lecture, it will definitely help you in your sessional exams and university exam. Let's get started. Let's start with definition of cybercrime. Cybercrime refers to illegal activities carried out using computers or the internet. It involves crimes where a computer or network is the target, example hacking, denial of service attacks. A computer or network is used as a tool to commit an offense, example fraud, identity theft, or criminal activities are carried out on the internet, example cyberstalking, spreading malware. Cybercrime can occur in different forms such as theft, fraud, exploitation, and disruption. Due to the anonymity and global reach of the internet, cybercrimes can be challenging to detect, track, and prevent. साइबर अपराध उन गैरकानूनी गतिविधियों को कहते हैं जो कंप्यूटर या इंटरनेट के माध्यम से की जाती हैं। इसमें कंप्यूटर या नेटवर्क को निशाना बनाना, जैसे हैकिंग, या उसे अपराध करने के लिए उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना, जैसे धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, शामिल होता है। इंटरनेट पर होने वाले अपराधों जैसे साइबर स्टॉकिंग या वायरस फैलाने को भी साइबर अपराध कहा जाता है। Now let's understand origins of the word cybercrime. The term cybercrime combines cyber, derived from cybernetics, a word associated with the study of control and communication in machines and living organisms, and crime. The development of information and communication technology, ICT, expanded the scope of criminal activities, hence introducing the concept of crimes occurring in cyberspace. The term gained prominence with the rise of the Internet and digital devices in the late 20th century. Initially used to describe illegal activities performed via computers, it now encompasses a broader range of crimes involving technology. साइबर अपराध शब्द में साइबर का मतलब साइबरनेटिक्स से लिया गया है, जो मशीनों और जीवित चीजों में नियंत्रण और संचार के अध्ययन से जुड़ा है, और अपराध का मतलब गलत कामों से है। जब सूचना और संचार तकनीक ICT का विकास हुआ, तो अपराधों की नई शक्लें भी सामने आईं, जो अब इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के जरिए की जाती हैं। यह शब्द 20वीं सदी के अंत में इंटरनेट और कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग के साथ मशहूर हुआ। शुरुआत में इसे कंप्यूटर से जुड़े अपराधों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यह सभी तकनीकी अपराधों को शामिल करता है। Let's move forward and discuss information security. Information security refers to the processes and measures implemented to protect data from unauthorized access, misuse, disruption, destruction, or alteration. It focuses on three main aspects. Confidentiality, ensuring that only authorized individuals have access to information. Integrity, ensuring that data remains unaltered during storage or transmission. Availability, ensuring that information is accessible to authorized users when needed. Information security practices are vital in preventing cybercrime as they help protect against data breaches, unauthorized access, and the spread of malicious software. Needs, experts believe the CIA Triad needs an upgrade to stay effective. सूचना सुरक्षा उन प्रक्रियाओं और उपायों को कहते हैं जो डेटा को बिना अनुमति के पहुंच, गलत उपयोग, गड़बड़ी, नष्ट होने या बदलाव से बचाने के लिए अपनाए जाते हैं। इसमें तीन मुख्य बातें शामिल होती हैं। गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, यह सुनिश्चित करना कि केवल सही और अधिकृत लोग ही जानकारी तक पहुंच सकें। सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, यह सुनिश्चित करना कि डेटा संग्रहण या भेजने के दौरान बिना बदले सही रूप में रहे। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी, यह सुनिश्चित करना कि जानकारी सही समय पर अधिकृत उपयोगकर्ताओं को आसानी से मिल सके। सूचना सुरक्षा की ये प्रक्रियाएं साइबर अपराध को रोकने में मदद करती हैं क्योंकि ये डेटा चोरी, बिना अनुमति पहुंच और खतरनाक सॉफ्टवेयर के फैलाव से बचाव करती हैं। Now question arise, what is CIA Triad? Confidentiality, integrity and availability, also known as the CIA Triad, is a model designed to guide policies for information security within an organization. The model is also sometimes referred to as the AIC Triad, availability, integrity and confidentiality, to avoid confusion with the Central Intelligence Agency.
Although elements of the triad are three of the most foundational and crucial cybersecurity needs, experts believe the CIA Triad needs an upgrade to stay effective. CIA त्रिकोण सूचना सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण मॉडल है जो डेटा की सुरक्षा के लिए तीन मुख्य सिद्धांतों को दर्शाता है। यह गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी और उपलब्धता, अवेलेबिलिटी का प्रतीक है। ये तीनों तत्व किसी भी सूचना सुरक्षा ढांचे की रीढ़ हैं और इन्हीं के आधार पर डेटा सुरक्षा के नियम, प्रक्रियाएं और अभ्यास बनाए जाते हैं। गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी केवल सही और अधिकृत लोग ही जानकारी तक पहुंच सकते हैं। सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी डेटा बिना किसी बदलाव या नुकसान के सही रूप में बना रहता है। उपलब्धता, अवेलेबिलिटी जानकारी तब उपलब्ध होती है जब अधिकृत उपयोगकर्ताओं को इसकी जरूरत होती है। यह तीनों सिद्धांत किसी भी सूचना प्रणाली को सुरक्षित रखने के लिए बहुत जरूरी है। Let's discuss confidentiality. Disclosure. It ensures that sensitive information is only accessible to those who have the proper authorization. The goal is to prevent sensitive data from being seen by anyone who doesn't have the right permissions. Key concepts and methods to maintain confidentiality. Access control, ensuring that only authorized users can access certain data or systems. This includes user authentication mechanisms like usernames and passwords, multi-factor authentication, MFA, and biometric verification. Encryption, encoding data in such a way that only authorized parties can read it. Encryption protects data both in transit, while it's being transmitted over a network, and at rest, when it's stored. Data masking, masking sensitive data to hide its true value from unauthorized users, e.g., masking credit card numbers. Least privilege principle, limiting user access to only what is necessary for them to perform their job functions. This minimizes the risk of unauthorized access. Training and policies, ensuring that employees are aware of data privacy rules and best practices to avoid accidental breaches. Example of confidentiality breach. A confidentiality breach occurs if a hacker gains unauthorized access to a database containing personal customer information, such as social security numbers or credit card details. गोपनीयता, confidentiality, यह सुनिश्चित करती है कि संवेदनशील जानकारी केवल उन्हीं लोगों को उपलब्ध हो, जिनके पास सही अनुमति हो। इसका उद्देश्य डेटा को उन लोगों से बचाना है, जो इसके देखने के हकदार नहीं है। गोपनीयता बनाए रखने के मुख्य तरीके। एक्सेस कंट्रोल, केवल अधिकृत उपयोगकर्ताओं को ही डेटा या सिस्टम तक पहुंच मिलती है, जैसे यूजर नेम पासवर्ड, मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। एन्क्रिप्शन, डेटा को इस तरह से कोडिंग करना कि केवल सही व्यक्ति ही उसे पढ़ सकें, चाहे डेटा नेटवर्क पर भेजा जा रहा हो या संग्रहित हो। डेटा मास्किंग, संवेदनशील डेटा को छिपाकर दिखाना, ताकि गलत व्यक्ति इसे न देख सकें, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर छिपाना। लीस्ट प्रिविलेज सिद्धांत, उपयोगकर्ताओं को केवल वही जानकारी देना जो उनके काम के लिए जरूरी हो, ताकि अनधिकृत पहुंच का खतरा कम हो। प्रशिक्षण और नीतियां, कर्मचारियों को डेटा गोपनीयता के नियम और सुरक्षा उपायों की जानकारी देना ताकि गलतियों से बचा जा सके। उदाहरण, अगर कोई हैकर बिना अनुमति के किसी डेटाबेस तक पहुंच जाए जिसमें ग्राहकों की व्यक्तिगत जानकारी हो, जैसे कि सोशल सिक्योरिटी नंबर या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, तो यह गोपनीयता का उल्लंघन है। Let's discuss integrity. Integrity ensures that data remains accurate, consistent, and trustworthy throughout its life cycle. It guarantees that data has not been altered, tampered with, or deleted, either accidentally or maliciously. Any unauthorized modification of data, whether during storage or transmission, compromises integrity. Key concepts and methods to maintain integrity. Hashing, generating a fixed-size string from a piece of data, known as a hash. Even the slightest change to the data will result in a completely different hash, which can be used to verify data integrity. Checksums, used to verify the integrity of data during transmission. If the checksum of the transmitted data matches the original checksum, the data has not been altered. Digital signatures, an electronic signature that verifies the authenticity and integrity of a message or document. Data backups and redundancy, regularly backing up data ensures that in the event of corruption or tampering, a clean and accurate version of the data can be restored.
Version control systems that track changes to data or code, ensuring any unauthorized or erroneous changes can be identified and reversed. Example of integrity breach. An integrity breach occurs if an attacker alters financial transaction records in a database, changing the amount of money transferred, resulting in incorrect financial data. सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी, यह सुनिश्चित करती है कि डेटा पूरे समय सही, सटीक और विश्वसनीय बना रहे। इसका मतलब है कि डेटा को बिना अनुमति के न बदला जाए, न हटाया जाए, चाहे गलती से हो या जानबूझकर। अगर डेटा में अनधिकृत बदलाव होता है, तो सत्यनिष्ठा खतरे में पड़ जाती है। सत्यनिष्ठा बनाए रखने के मुख्य तरीके। हैशिंग, डेटा से एक निश्चित आकार का स्ट्रिंग, हैश, बनाना। अगर डेटा में थोड़ा भी बदलाव हो, तो हैश पूरी तरह बदल जाता है, जिससे डेटा की सत्यनिष्ठा की जांच की जा सकती है। चेकसम, डेटा के ट्रांसमिशन के दौरान इसकी सत्यनिष्ठा जांचने के लिए चेकसम का उपयोग किया जाता है। अगर भेजे गए डेटा का चेकसम मूल चेकसम से मेल खाता है, तो डेटा बदला नहीं गया है। डिजिटल सिग्नेचर, एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर जो संदेश या दस्तावेज की सत्यनिष्ठा और प्रामाणिकता को प्रमाणित करता है। डेटा बैकअप और पुनरावृत्ति, डेटा का नियमित बैकअप लेना ताकि किसी गड़बड़ी या छेड़छाड़ की स्थिति में सही डेटा को वापस लाया जा सके। वर्जन कंट्रोल सिस्टम, ये सिस्टम डेटा या कोड में हुए बदलावों को ट्रैक करते हैं, जिससे किसी भी अनधिकृत या गलती से किए गए बदलाव की पहचान की जा सके और उसे पलटा जा सके। उदाहरण, एक सत्यनिष्ठा उल्लंघन तब होता है जब कोई हमलावर किसी डेटाबेस में वित्तीय लेनदेन रिकॉर्ड को बदल देता है, जिससे गलत वित्तीय डेटा बन जाता है। Let's discuss availability. Availability ensures that information and resources are accessible to authorized users whenever they need it. Systems must be operational and able to function without significant downtime or disruption. The goal of availability is to maintain systems and services in a way that they can handle legitimate user requests at all times. Key concepts and methods to maintain availability. Redundancy and fault tolerance, designing systems that include multiple resources, example, servers, networks, so that if one fails, another can take its place without disrupting service. Backup and recovery plans, having robust backup mechanisms and disaster recovery plans ensures that systems can quickly recover from data loss or hardware failure. Load balancing, distributing workloads across multiple servers to prevent any single server from being overwhelmed, ensuring that services remain available. Network and hardware maintenance, regular updates, maintenance, and patching of hardware and network infrastructure prevent failures that could impact availability. Protection against DDoS, distributed denial of service, attacks, implementing strategies such as traffic filtering and firewalls to prevent malicious users from overwhelming systems and causing downtime. Example of availability breach. An availability breach occurs during a DDoS attack, where an attacker floods a company's website with excessive traffic, making the site unavailable to legitimate users. उपलब्धता, availability, यह सुनिश्चित करती है कि जानकारी और संसाधन सही समय पर अधिकृत उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध रहें। सिस्टम को बिना किसी बड़े व्यवधान के काम करना चाहिए ताकि उपयोगकर्ता जब भी चाहें, उन्हें सेवा मिल सके। उपलब्धता का उद्देश्य सिस्टम और सेवाओं को इस तरह से बनाए रखना है कि वे हमेशा उपयोगकर्ता के अनुरोधों को संभाल सकें। उपलब्धता बनाए रखने के मुख्य तरीके। रिडंडेंसी और फॉल्ट टॉलरेंस, सिस्टम को इस तरह से डिजाइन करना कि अगर एक संसाधन, जैसे सर्वर, नेटवर्क, विफल हो जाए, तो दूसरा बिना सेवा बाधित किए उसकी जगह ले सके। बैकअप और रिकवरी प्लान, मजबूत बैकअप तंत्र और डिजास्टर रिकवरी योजनाओं से डेटा के नुकसान या हार्डवेयर विफलता से जल्दी रिकवर किया जा सकता है। लोड बैलेंसिंग, काम के बोझ को कई सर्वरों में वितरित करना ताकि कोई भी सर्वर ओवरलोड न हो, जिससे सेवा निरंतर उपलब्ध रहती है। नेटवर्क और हार्डवेयर रखरखाव, नियमित अपडेट, रखरखाव और हार्डवेयर और नेटवर्क संरचना की पैचिंग से विफलताओं को रोका जा सकता है, जो उपलब्धता को प्रभावित कर सकती है। DDoS हमलों से बचाव, ट्रैफिक फिल्टरिंग और फायरवॉल जैसी रणनीतियों का उपयोग करके यह सुनिश्चित करना कि दुर्भावनापूर्ण उपयोगकर्ता सिस्टम को डाउन न कर सके। उदाहरण, उपलब्धता उल्लंघन तब होता है जब DDoS हमले के दौरान हमलावर किसी कंपनी की वेबसाइट पर बहुत अधिक ट्रैफिक भेजते हैं, जिससे साइट वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध हो जाती है।
So it's all about introduction to cybercrime. Origins of the word cybercrime. Information security and CIA Triad. In the next lecture we will discuss who are cybercriminals. Classifications of cybercrimes. Next topic of Unit 1. So please subscribe the channel for next video update, and if you want notes of this lecture so please comment down below. Thanks for watching this video. See you in next lecture. Till now, bye bye.